Uh, Good afternoon to you all. First of all, we'll be discussing about tax to GDP ratio. What does this means, and why I'm telling you because this has been one of the important topics being discussed, debated in different newspapers in the last 1 month, and even few papers comes out with tax GDP ratio for developing countries, emerging markets, economies, and other state of economy. And that's why I thought that as a student, you need to understand that what does this means largely and its implications. Now, when you talk about tax to GDP ratio, so in a normal way, when you talk about GDP, so we know that it's value of goods and services being produced. Whenever certain set of goods and services will be produced, it means certain economic activities are being carried forward in the economy. When certain economic activities are being carried forward in the economy, so we can take a note that some set of investments are being done. With those investments, there may be employment and output generation, income generation. With income generation, now comes consumption. The increase in consumption is a sign that your indirect tax collections will increase. An increase in income generation somewhere or the other will indicate that direct tax collections will increase. Now, in most of the developing countries or least developed countries, the challenge becomes कि जीडीपी बढ़ता है बट देन टैक्स कलेक्शंस उसके अकॉर्डिंग्स नहीं बढ़ता। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि जीडीपी बढ़ता है टैक्स कलेक्शंस नहीं बढ़े। तो एक रीजन हो सकता है कि जो टैक्स पेयर्स कम्युनिटी है वो लेस है। जब टैक्स पेयर्स कम्युनिटी लेस नंबर रहेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आई मीन दे आर आइदर सब्सिडाइज्ड class or they are largely dependent upon the government and so they are not under the tax paying community. इसका ये भी मतलब हो सकता है कि इकोनॉमी में जीडीपी जो ग्रोथ हुआ, इतना जीडीपी ग्रोथ होने के बावजूद भी लोअर बेस है, इनकम बेस, वहां पर ज्यादातर पॉपुलेशन आपका है जो कि टैक्स पेयर्स नहीं है, उनकी एबिलिटी टू पे टैक्स की नहीं है। तो जीडीपी ग्रोथ हुआ तो इसका मतलब ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो जीडीपी ग्रोथ हुआ उसमें लार्जर पॉपुलेशन की पार्टिसिपेशन कम है और स्मॉल पॉपुलेशन की पार्टिसिपेशन क्या है, अधिक है। तो जो इनकम डिराइव किया वो किसने किया, स्मॉल पॉपुलेशन ने किया। दूसरा एक ये भी रीजन हो सकता है कि जीडीपी बढ़ा बट कुछ ऐसे सेक्टर हो सकते हैं जहां से इनकम आप अर्न किए हैं वो आज भी टैक्स नहीं है, सच एज एग्रीकल्चरल इनकम।
तो इस कुछ रीजन से ऐसा हो सकता है कि डेवलपिंग कंट्रीज, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या हो, कम। और एक मेजर इंडिकेशन तो इसे मिल ही रहा है ना कि भाई वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो उनका जीडीपी ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो जब जीडीपी ग्रोथ ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट टू बी वेरी वेरी हाई। तो हाउ वी कैन कंसेप्चुअलाइज, पे अटेंशन, कैसे कंसेप्चुअलाइज करेंगे, कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे इसको, लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो को। जनरली एक इकोनॉमी में ऐसा होना चाहिए कि जीडीपी ग्रोथ हो तो इन अकॉर्डिंग विद दैट चेंज इन जीडीपी ग्रोथ देयर नीड टू बी सर्टेन चेंजेस इन टैक्सेशन, टैक्स रेवेन्यू। और इसीलिए हम बोलते हैं ना कि हमारी टैक्स जो है ना इलास्टिक है, हमारी टैक्स जो है ना बायंट है। इसका मतलब चेंजेस इन जीडीपी ग्रोथ हमारी टैक्स रेवेन्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये रैशनल सिचुएशंस हैं किसी भी पर्टिकुलर इकोनॉमी के, बट ऐसा होता नहीं है। अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ता है आपकी इकोनॉमी में तो ये सिंपल इंडिकेशन देता है कि गवर्नमेंट को अब ज्यादा फिस्कल स्पेस मिलेगा सो दैट इट कैन स्पेंड ऑन वेरियस वेलफेयर स्कीम्स। दूसरा क्या गवर्नमेंट के लिए फायदेमंद है कि जब टैक्सेशन से रेवेन्यू इतना आ रहा है तो गवर्नमेंट में नॉट गो फॉर मार्केट बोरोइंग्स। जहां तक कुछ रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक की कहती है कि अगर किसी कंट्री में, किसी कंट्री का टैक्स टू जीडीपी रेशियो 15% और उससे अधिक हो तो उससे क्या होता है कि दैट हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट हेल्प्स इन पॉवर्टी रिडक्शन। सो एक आइडियल कंडीशन वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग क्या माना जा रहा है कि भाई किसी भी कंट्री का टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना होना चाहिए, 15% एंड अबव। और इसकी दो चीजें वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट कहते हैं, वो रिपोर्ट क्या बोल रहा है कि अगर ऐसा होता है सो दैट लीड्स टू, दैट हेल्प्स इन अटेनमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और दूसरा क्या है, पॉवर्टी रिडक्शन। अब क्यों ऐसा पॉवर्टी रिडक्शन की क्यों बात की जा रही है, तो पॉवर्टी रिडक्शन की बात करिए कि जो टैक्सेशन से रेवेन्यू हो रहा है गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, वेलफेयर स्कीम्स में खर्च करेगी। और दूसरी क्या बात है, अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ रहा है आपका तो सिंपली ये साइन दे रहा है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है कहीं ना कहीं उसका फायदा ट्रिकल डाउन होगा एट द लोअर स्ट्रेटा, और उस इकोनॉमिक ग्रोथ से इनडायरेक्टली क्या होगा, लोअर स्ट्रेटा को फायदा होगा। अब मान लीजिए कि आपकी एक इंडस्ट्री है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो हो सकता है कि मैं डायरेक्टली बेनिफिट नहीं हूं, मैं इनडायरेक्टली भी बेनिफिटेड हूं। तो ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट कहता है। जो डेटा है हमारे पास वो ये कह रहा है कि जो लिस्ट लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज थे, डेटा मैं तुम लोग को लिखा दूंगा, पहले ध्यान से सुनो। लो इनकम डेवलपिंग कंट्री जो थे उनका जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो था 1990s में वो नियर अबाउट 10% था। एंड दिस इंक्लूड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस। Social security contributions, you know, India, EPF, Employee Provident Fund and all. So these becomes part of social security contributions. So जो tax to GDP ratio था 1990s में, I mean जो low income developing countries थे उनका कितना था, 10% of GDP। 2020 में ये जो फिगर है LIDC का, लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज का, वो कितना है, नियर अबाउट 13.8%। इसका मतलब 1990 टू 2020 30 सालों में जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो
लो और लिस्ट इनकम लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज का है, लिस्ट इनकम डेवलपिंग कंट्रीज का जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो 10% से कितना हुआ है, 13.8%। इतना याद रहेगा आप लोगों को, डेटा का यूज की वजह से मैं बता रहा हूं। उसके बाद जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं उनका कितना था, 30.1 था 1990 में टैक्स टू जीडीपी रेशियो, और 2020 में वो डेटा है 32.5, 30 से 32.5 एडवांस इकोनॉमीज। और जो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज हैं लाइक इंडिया, तो उनका जो था 1990 में 14.8 था और 2020 में है वो 19.7। लिख लीजिए फिगर्स, हेडिंग दे देना, लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो, सॉरी टैक्स टू जीडीपी रेशियो, टैक्स टू जीडीपी रेशियो, एडवांस्ड इकोनॉमी, दो कॉलम बना दो, 1990 एंड 2020, 1990 एंड 2020। एडवांस्ड इकोनॉमीज के कॉन्टेक्स्ट में लिखिए 1990 में लिखिए 30.1, 2020 में लिखिए 32.5, बी फास्ट, 32.5, 32.5। इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज के कॉन्टेक्स्ट में लिखिए 1990 में 14.8, 14.8 एंड 2020 में लिखिए 19.7। LIDC के कॉन्टेक्स्ट में लिखिए 10.1 in 1990 and 13.8 in 2020। 10.1 and 13.8। फिर से क्रॉस चेक इट, एडवांस इकोनॉमीज 1990 में 30.1, 2020 में 32.5, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज 14.8, 2020 में 19.7, LIDC 1990 में 10.1 एंड 2020 में 13.8। ये डेटा याद हो जाना चाहिए। देखो कैसे याद करोगे, पहले हम एडवांस से चलते हैं, 30 से 32 तो याद रख सकते हो ना, 32। और ये जो डेटा है 2020 का, तुम अगले 2-3 साल तक आराम से यूज कर सकते हो अगर डेटा तुमने अपडेट भी नहीं किया तो। पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग, इन राइटिंग आंसर्स फॉर द मेंस, this data which I have just narrated, you can use the same data in the next 2 to 3 years also। जहां पर अगर एक क्वेश्चन आता है कि रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, एक क्वेश्चन आता है टैक्स रेवेन्यू से रिलेटेड या रिसोर्स मोबिलाइजेशन से रिलेटेड, तो आप ये डेटा आराम से लिख सकते हैं, कंसिडरिंग जस्टिफाइंग योर आइडिया, थॉट प्रोसेस और डायमेंशंस कि भाई व्हाट इज द वर्ल्ड सिनेरियो एज फार एज टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज कंसर्न। नॉट ओनली इसको टैक्स टू जीडीपी रेशियो के ही लिए नहीं, कोई भी क्वेश्चन हो रिसोर्स मोबिलाइजेशन के रिलेटेड, रिसोर्स मोबिलाइजेशन के रिलेटेड, so that's what you can use it। Understood? So first thing what I want to mention, advanced economies 30 to 32। देखो 30.1 भी याद करने की जरूरत नहीं है, अप्रॉक्स, अबाउट। अंडरस्टूड? तो आप इतना डेटा आपको याद करना पड़ता है, तो आप इतना भी लिखे ना कि अबाउट 30% of GDP, about 32% of GDP, that will do। Understood? That will do। अब देखो थियरी क्या कहता है टैक्स टू जीडीपी रेशियो के कॉन्टेक्स्ट में। एक इकोनॉमिक थियरी है बाय वैगनर, ही इज एन इकोनॉमिस्ट। व्हाट ही सेज कि कभी भी एक कंट्री डेवलप होता है तो वहां पर बहुत सारी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना होता है, बिकॉज दैट पीपल और पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री स्टार्ट्स डिमांडिंग इट। गुड एजुकेशन होना चाहिए, गुड हेल्थ केयर सर्विसेज होना चाहिए, एंड ऑल दिस रिक्वायर्स लार्जर इन्वेस्टमेंट। सो अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट does have that huge tax revenue
government may not be able to provide such quality infrastructure. So, as and when countries progresses, develops, government needs additional revenue also, resources also in order to provide quality infrastructure. Understood? Now we need to understand कि Indian context में क्या है हमारा, हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो पर्टिकुलरली क्या है. 1990 में हमारा जो ओवरऑल टैक्स टू जीडीपी रेशियो था वो 14.1% था. 14.1% में 14.1% में स्टेट टैक्सेस जो थे ना 5.1% थे और सेंट्रल जो टैक्सेस थे ना वो 9.2% थे. अगर आपको सेंटर स्टेट्स की बाइफर्केशन भी नहीं याद आती है तो आप याद रख लेना अप्रॉक्स 14%. सो 1990 में ये कंडीशन था. 2000 फर्स्ट 3 years ऑफ दिस पर्टिकुलर डिकेड, इसका मतलब 2021, 21, 22, 22, 23, ये थर्ड जो डिकेड है 21st सेंचुरी का, उसमें ऑन एन एवरेज हमारा जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो है अराउंड 17.7%. 17.7%. सेकेंड जो डिकेड है, जस्ट होल्ड ऑन, आई विल नॉट बी एक्सप्लेनिंग यू टू इंडिविजुअली, प्लीज लिसन टू इट. एट द एंड यू मे आस्क क्वेश्चंस. In the first decade, I told you that it first decade means 2000 to 2010. It increased to 15.4%. In the second decade, 2010 to 2020, it was 16.7%. And the first 3 years of this decade, what I told you, 17.7%. Again, coming back to the data, India's tax to GDP ratio in 1990 was around 14.3%. In the first decade of 21st century, it was around 15.4%. Second decade, it increases to 16.7%. And third decade, for the first 3 years of the third decade, is 17.7%. Now, going by the emerging market economies, where in 2020, the figure is 19.7, India lags. India lags. So, we are part of emerging market economies, but then as far as tax to GDP ratio is considered, we lag because by 2020, 2022, 23, हमारा tax to GDP ratio कितना है? 7.7%. Now, again, restructuring the things, restructuring the concepts, restructuring the ideas, restructuring the dimension. Please listen carefully. I told you tax to GDP ratio is calculated or is derived from total tax revenue divided by GDP of the country. Total tax revenue divided by GDP of the country. According to World Bank, if a particular country is having tax to GDP ratio as 15% or more, that will help the countries in attainment of economic growth and at the same time poverty reduction. The third important point I told you all, that as and when a country progresses, the population demands better infrastructure. So if a particular country is having higher tax to GDP ratio, that helps in managing better infrastructure, let it be quality education or quality healthcare services. Going by the data of tax to GDP ratio of LIDC, E.M.P, and advanced economies, the data shows that tax to GDP ratio of advanced economies were around 30% in 1990, which increased to 32.5% in 2020.
For emerging market economies, it is 14.8%, 14.8% in 1990 to 19.7% in 2020. For LIDC, it was approximately 10% in 1990, which increased to 13.8% in 2020. As far as this data in Indian context is concerned, in India, in 1990, the tax to GDP ratio was 14.3%. In the first decade of 21st century, it was 15.5%. Second decade, it was 16.7%. And the first 3 years of, third decade of 21st century, it is 17.7%. So when we compare the India's data with emerging market economies data, we lack in terms of tax to GDP ratio. India still has lower tax to GDP ratio as compared to emerging market partners. Now the question comes, what can be the reason why India lacks in terms of low tax to GDP ratio? Now the first important reason is that we do have larger presence of informal and or unorganized sector. So in a particular country wherein 80% of the activities are performed, more than 80% is performed in informal sector or unorganized sector. So definitely, the first thing will come out by how to make them accountable, how data need to be collected from them, and how you can tax them. So let's say if a particular hawker is selling fruits, vegetable, a vendor is selling, pani puri. So automatically, he is also contributing to the production of goods and services that will be counted as a part of GDP, but then he may not be able to pay a tax considering, his income is not accounted. Such set of economic activities are performed across the country, and that's why it becomes very difficult to tax them. Second important point for low tax GDP ratio is that lower per capita income and high level of poverty. Though government can say today that people have come out of poverty, the day I was discussing with you all also, it is shame on our part that today also India after 75 years of independence is debating on that larger set of population have come out of poverty. It means 75 years लगे हमें to to enforce people come out of poverty. So wherein we are talking about bullet trains, wherein we are talking about space and space economy. So it is also one of the important fact that India is struggling at the bottom of the pyramid. So it means the way India introduced technology, the way India boosted its economy, the larger benefit of that growth has not percolated at the bottom of the pyramid. And that's why the per capita income is less, and at the same time, higher level of poverty. So accordingly, if the per capita income will be low, ability to pay will be very less, and that's why you cannot tax those set of population. You can well understand that today if we talk about National Food Security Act, this particular act today also covers more than 65% of India's population wherein they get subsidized food grains. Now, if more than 65% of the population are dependent on subsidized food grains, where there is chance that you will be taxing them. And that's what I'm trying to tell you. The reason behind low tax to GDP ratio is also, people either have come out of poverty or they are near to poverty line. Next important point is that agriculture income not taxed in India, and there can be one more point that
there are disputes and litigation issues due to interpretations of different clauses of income tax provisions. Most of the time, cases are pending with Supreme Court, wherein you can well understand the case related to, Vodafone, case related with different companies are pending, and government is not able to justify because the compliances were not very, very transparent. So unless and until there need to be clarity with the provisions of the taxation, you cannot impose a tax. Or even if you are imposing, misinterpreting it, so the companies definitely are bound to go to this judiciary to have a, lawful decisions in their interest. So these are few regions which can be stated India having low tax to GDP ratio. Apart from it, there are different provisions which becomes part of tax expenditure in the form of various tax exemptions and all. And many of the tax exemptions which are given by the government, are not revised or reviewed for the sake of certain political gains, and that's what also can be one of the reason behind, uh, loss of revenue for the government. So these are the regions which I told you. Number one, agriculture income not taxed, low per capita income, people is still getting, people still are either have come out of poverty line or near to poverty line. नेक्स्ट में इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट क्या बताया था आपको, अनऑर्गेनाइज सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर, और एक और बताया था कि लिटिगेशंस और डिस्प्यूट्स which are pending before the courts. Understood? So these are few regions which are the, which in context of India, which are the regions behind low tax to GDP ratio. Now what you need to do, write one question. Yes, what do you want to ask? Ask me when I'm taking a pause. This is current affairs sessions now. Students are online also. So when I'll be taking a pause, then only you can ask a question. Yes, Rishi, what do you want to ask? अच्छा, याद आए तो पूछ लेना. अच्छा, हाँ बेटा. हाँ, देखिए, तब आपको पॉइंट समझ में नहीं आया. जो इनकम टैक्स के प्रोविजंस रहते हैं, क्लॉजेज रहते हैं, सब क्लॉजेज रहते हैं. तो the way different lawyers interpret the constitutional articles or not, similarly those taxation provisions are also interpreted and misinterpreted uh, in different way at different times, so as to benefit a particular client. So if there are certain clarity, if there will be certain clarity in those provisions of the taxation, so automatically such things, such disputes will not arise. Understood? That's what was the point behind it. Now these तुम लोग क्वेश्चंस कहाँ लिख रहे हो? क्वेश्चंस ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है. तुम लोग, आज तो पेज नहीं था, ऐसा करो कि क्वेश्चंस घर पर लिखोगे. मैं क्वेश्चन लिखा दे रहा हूं, इसका आंसर घर पर लिखोगे, और दैट नीड टू बी सबमिटेड. अंडरस्टूड? दैट नीड टू बी सबमिटेड. उस पर नाम लिख देना अपना. लिखो. The roadmap for India, the roadmap for India to become developed state
can only be attained if challenges regarding tax to GDP ratio are taken care of are taken care of. Full stop. Comment. 200 words. Huh? 200 words. No marks. This you need to submit next time when we'll be meeting for current affairs session. आप यहाँ पर submit करेंगे and इसका discussion will be doing. Any question based on low tax to GDP ratio? I mean, I can take up that question, or else we'll be taking up the next issue. सबको समझ में आया? Anyone who has not understood? Clear हुआ आपको tax to GDP ratio? देखिए, अगर जीडीपी बढ़ रहा है और आपका टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, इसका मतलब इन लाइन विथ चेंजिंग जीडीपी योर टैक्स रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग. दैट्स व्हाट मेक्स टैक्स इलास्टिक और बायंट. इसी को हम कहते हैं टैक्स बायंसी, इसी को कहते हैं हम टैक्स इलास्टिसिटी. अंडरस्टूड? सो एक कंट्री में अगर ग्रोथ हो रहा है तो उसकी टैक्स रेवेन्यू भी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए. बट देन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया जितना बढ़ना चाहिए उतना बढ़ नहीं रहा है, and that's what is the question which need to be assessed comparing India with international global counterparts. Understood? So ये जो कोई भी क्वेश्चंस आपको इस तरह से आते हैं कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन से रिलेटेड या टैक्सेशन से रिलेटेड या टैक्स रेवेन्यू से रिलेटेड, तो ये डेटा जो है आप जुडिशियसली समझ में आ रहा, विद योर विजडम यू कैन यूज इट. देखो बहुत बार क्या होता है ना कि इट्स ऑल टुगेदर डिपेंड्स अपॉन योर थॉट प्रोसेस. आपको ऐसे लगेगा कि यार डेटा का यूज इसमें क्या करे, बट देखो एक इंटेलिजेंट एक स्मार्ट स्टूडेंट होता है ना, तो अपने नरेटिव को इस तरह से नरेट करता है या कोरिलेट करता है, एक पर्टिकुलर डेटा का यूज वो स्मार्टली करेगा. दैट्स व्हाट विल गिव अ डिफरेंट डायमेंशन टू हिज और हर आंसर. So you need to understand time and again we will be writing, and this will only come when we'll be writing more, when we'll be thinking, when you do have conceptual clear about a particular topic or concept. So conceptually sound rahoge तो automatically you can know the smart ways where you can use the data. Understood? किस कोई भी है जिनको टैक्स टू जीडीपी रेशियो नहीं समझ में आया? यस ऋषि, हाँ बोलिए. देखो रेशियो का मतलब ही हुआ ना कि अगर x अपॉन वाई कहते हो तो रेशियो हो गया. समझ में आ रहा? तो उसी तरह से न्यूमरेटर में हमने टैक्स रेवेन्यू रख दिया, डिनोमिनेटर में हमने जीडीपी रख दिया, तो एक रेशियो हो गया. अंडरस्टूड? तो उसी रेशियो की बात कर रहे हैं कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आज के डेट में नियर बाई 17.7% है. वही इमर्जिंग मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में इज नियर अबाउट 20%. तो कहीं ना कहीं इंडिया बीइंग ए इमर्जिंग मार्केट आल्सो, आई मीन वी लैक एज कंपेयर टू आवर पार्टनर्स. सो हमें क्या करना चाहिए? दैट्स व्हाट वाज द डिस्कशन टेकिंग प्लेस. अंडरस्टूड ऋषि? Is those who are online, is anyone who has not understood? Anyone? Sir, please repeat tax buoyancy. अब मैं टैक्स बायंसी टैक्स एलासिटी बताया नहीं, मैं सिंपली आपको बताया देयर इज टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन टैक्स बायंसी एंड टैक्स एलासिटी. आई विल बी टेकिंग अप आई मीन एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, अदरवाइज बी आई विल बी स्टिकिंग टू दैट ओनली. सिंपली इतना मैं लेमन टर्म्स में आज आपको बता दे रहा हूं कि जैसे जैसे जीडीपी बढ़ता है, अगर मान लीजिए कि टैक्स रेट्स टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, अंडरस्टूड,
तो इसका मतलब ही हुआ कि आइदर आपका टैक्स आपका टैक्स क्या है, इलास्टिक या टैक्स बायंट है। मतलब बायंसी का मतलब या मूविंग, अंडरस्टूड। सो अभी मैं इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूं टैक्स इलास्टिक एंड टैक्स बायंसी, बट नेक्स्ट टाइम या कभी भी हम लोग मिलेंगे तो आई विल बी डिस्कसिंग विद यू ऑल्सो। वन इज डिस्क्रिशनरी, अदर वन इज नॉट डिस्क्रिशनरी, जिसमें दोनों में टेक्निकल डिफरेंस है टैक्स इलास्टिक एंड टैक्स बायंसी में। बट सिंपली आपको याद रखना है यहां पर कि विथ चेंजेज इन जीडीपी द टैक्स रेवेन्यू मस्ट चेंज। अंडरस्टूड डियर? हेलो Yes, sir. Thank you. हर्षवर्धन, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई विल बी डिस्कसिंग विद यू। अगर मैं उसमें जाऊंगा तो आई विल नॉट बी एबल टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, अंडरस्टूड? सो दैट्स व्हाट इज द Okay, sir. लिमिटेशन विद मी, एंड दैट्स व्हाई। No problem, sir. हेलो सर। हाँ, टैक्स इवेजन एंड करप्शन। हेलो सर। करप्शन में टैक्स इवेजन लिखो। यस यस, कम आउट। सर, could you please repeat the reasons for the low tax to GDP ratio in India? या पहला मैंने बोला कि लार्जर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड, larger economic activities are performed in informal sector or unorganized sector. Agriculture income is not taxed in India. Third important point मैंने बताया lower per capita income, and there are higher level of population. Larger percentage of population are either have come out of poverty line or are near to poverty line. और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने एक और बताया था आपको, there are lot many disputes and conflicts related to complexities in the provisions of the taxation. Is it fine? Shall I go with the next? Yes, sir. Thank you. हेलो Now सर। this will, yes, सर, आपने एक पॉइंट बोला था कि टैक्स एग्जेम्पशंस को रिवाइज ना करना भी एक रीजन है। वो कैसे होगा, वो एक्सप्लेन करेंगे क्या? देखिए बहुत सारे टैक्स एग्जेम्पशंस होते हैं ना। आई मीन लेट्स सी, गवर्नमेंट टैक्स एग्जेम्पशन दे रही है कि आप किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, किसी भी पर्टिकुलर सेविंग, स्मॉल सेविंग स्कीम्स में पैसे जमा कर रहे हैं तो अप टू 1.5 lakhs their government is giving tax exemption. Now government need to monitor this on a regular basis that whether this tax exemption is serving the economic interest or not. And if it is not serving the economic interest, government need to, I mean, dilute it, considering, I mean, it is not longer in the economic interest. So, in likewise, there are different exemptions which are being given by the government, and that's why government need to monitor it on a regular basis. Understood? So, if the government monitors this on a regular basis, and if the government finds that it is serving economic interest, that's fine. Government can keep it. But if not in economic interest, government need to, I mean, dilute it. That's what was my point. Was my point. Anyway, no further. I'll not be interested. Harshvardhan, did you understand? Yes, sir. And now, no next questions. I need to complete it. You can ask me at the end, for sure. दैट्स वाई आई आस्क्ड यू कि आप ये जो क्वेश्चन आपको मैंने आंसर्स लिखने के दिया है, आप लोग घर पर ही लिखोगे। टाइम थोड़ा लिख लो, मैंने डिस्कस तो किया ना। यू विल नॉट बी टेकिंग 15 to 20 minutes for this question, and try to stick to the time also. Those who are online, please, I mean, you see to it that you should follow it. Yes, sir. So time, what, how much time will be? 15 to 20 minutes ही लो और देखो कि तुम क्या लिख पा रहे हो। It's fine. Now we need to discuss India and G20. See, largely I'll be taking up two issues. One is induction of African Union, and number two, I'll be discussing India, Middle East, Europe economic corridor. ये दो पार्ट को कॉम्प्रिहेंसिवली हम डिस्कस करते हैं, बिकॉज आई मीन ड्यू टू टाइम लिमिटेशंस आई मे नॉट कवर द कॉम्प्रिहेंसिवली द अदर outcomes also, but then these are two important outcomes of G20 we need to discuss.
Now, the first point, pay attention and sit straight. G20 at present consists of 19 countries, 20th being European Union and 21st being African Union. Talking about G20 members at present, the G20 member countries represent around 85% of the global GDP. 85% of the global GDP is contributed by G20 members. 75% of the global trade again is driven by G20 members, and G20 member countries consist of 2 by 2/3 of world population. The G20 consists of two parallel tracks. One is Sherpa tracks and the second one is finance track. These are two tracks under G20 in order to engage amongst countries so as to come to a common consensus. So when you talk about finance track, these consist largely of finance ministers or central bank governors of respective countries, wherein they meet under this particular track to discuss certain issues in the finance and economics area. So any challenge being faced by the global community in the finance and economics, so automatically global trade, they are dealt in, finance track. While so-called Sherpas, is largely coordinated by Sherpas of member countries. Sherpa कहते हैं कि वो हर एक कंट्रीज के पर्सनल एमिशरीज होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, शेरपास. सो एक शेरपा ट्रैक होता है और दूसरा क्या होता है, फिनांस ट्रैक. इसके अलावे विद इन दीज टू ट्रैक्स देयर आर डिफरेंट सब ट्रैक्स ऑल्सो, wherein the members can coordinate with each other, discuss with each other, so that they can come to a, common consensus. Apart from these two tracks, there are certain engagement groups also, and these engagement groups brings civil societies, parliamentarians, think tank, women, youth, labor, business and researchers of G20 countries. So मैंने अभी तक आपको क्या बताया, 19 countries, 1 European Union, 1 African Union, 85% of global GDP, 75% of global trade, and 2/3 of global population. G20 involves two tracks, finance tracks and Sherpa tracks. Apart from it, there are different engagement groups also, which includes members from civic society, business, corporates, youth, women, and researchers of G20 countries. They coordinate with each other, discuss with each other regarding different issues being faced by the global world. Now, we need to understand the evolution also. See, in 1996-97, there was Southeast Asian crisis. Most of the Southeast Asian economies like Singapore, Malaysia, South Korea, Vietnam, all these countries faced a severe challenge. These countries were once, considered to be, Asian tigers. But due to certain decisions which should have not been taken by them, although those decisions were encouraged by IMF, but those decisions led those countries
to face experience a severe economic crisis, and most of the economies crashed within short interval of time. Now, learning why these crises, in 1990, G20 was founded, and these G20 was earlier it was only consisting of finance minister or central bank governors of respective countries to discuss global economic and financial issues. But after US financial crisis in 2007-8 onwards, the heads of the states or the governments started representing G20, and altogether, G20 this way expanded into a body which has got larger importance in 21st century. So earlier, it was simply a body consisting of finance ministers and central bank governors. But considering the importance of such, body, it now is being represented by heads of state government, different states or governments. So this is how G20 evolved. अब वन वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर ये सब डिस्कस नहीं करते हैं हम, ये सब रट्टा रटाए वाली बातें आप लोग याद कर लेंगे, समझिए सभी जगह मिलेगा आपको। हम लोग डिस्कस करते हैं जो मैं डिस्कस करता हूँ, समझ में आ रहा। तो पहले हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव व्यू डिस्कस करते हैं, एनालिटिकल व्यू कि इंक्लूजन ऑफ पहला इंपॉर्टेंट आउटकम था इसका, इंक्लूजन ऑफ अफ्रीकन यूनियन एज परमानेंट G20 मेंबर। इसमें एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है एंड आई वांट यू ऑल टू लिसन टू, ताकि आपको याद हो जाए और आपको दूसरी जगह कहीं पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े। और इंटरेस्टिंगली in the night I was preparing a draft of what need to be taught to my students. So मैं भी कुछ रिसर्च पेपर्स देख रहा था, कुछ एक्सपर्ट्स के व्यू देख रहे थे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जानते हो मैं जैसे ही गूगल कर रहा था ना, तो मुझे किसके आ रहे थे, डिफरेंट एकेडमी के ही व्यू पॉइंट आ रहे थे। और मैं बोला कि यार ये क्या आ रहा है, कहीं कुछ एक्सपर्ट्स ओपिनियन में उनको क्या देखूं। और मेरे पास इतने सारे न्यूज पेपर्स थे, मैं सबको एकदम मेरे बेडरूम में एकदम न्यूज पेपर ही था, मतलब सब तरफ न्यूज पेपर ही, कहीं भी कुछ दिखे एक्सपर्ट्स व्यू में देख रहा था। आई टेल यू इंटरेस्टिंगली, देयर वाज नॉट ए सिंगल वर्ड इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू एडिशन। मैंने एक बार चेक किया कि क्या लिखते हैं लोग। थिंग्स वर डायरेक्टली कॉपीड एंड पेस्टेड फ्रॉम न्यूज़पेपर्स। 1% भी वैल्यू एडिशन नहीं। मैं नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज ये अच्छी बात नहीं है। बट मैंने क्या वैल्यू ऐड किया, क्वेश्चन मार्क, उससे काम नहीं चलेगा। रियली व्हेन यू वांट टू बी टॉप स्कोरर्स, एक वर्ड का भी चेंज नहीं। और कैसे कॉपीराइट केस क्यों नहीं कर देता कोई? That's what I mean, that can be infringement, that is infringement of copyrights। आप उसको कमर्शियलाइज कर रहे हो किसी की राइटिंग को, आप हाउ यू कैन कमर्शियलाइज। There are lot many copyright issues which will be coming up due to AI also। AI की वजह से lot many copyright cases will be, judiciary will be, lot of overburdened with copyright issues। और कोई भी रिसर्च पेपर्स तो कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा, सब चोरी किया हुआ रहेगा बाय एआई। that's what is challenge, that's what is a challenge pertaining to AI। anyway, so थोड़ा सा ध्यान से सुनना जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला है कि देखिए अफ्रीकन यूनियन क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि पहले हम लोग क्या बात करते थे, ईस्ट वेस्ट बात करते थे। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, नॉर्थ साउथ बात कर रहे हैं, ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ। रियलिटी यही है कि नाइदर इंडिया नॉर चाइना
is interested in African Union. As usual, economics of interest lies with both the country, and whatever may suggest, they may narrate, everybody wants to win Africa. The only region is minerals and critical minerals. However, talking about African Union, it is an organization comprising 55 member states. And those 55 member states are countries of African continent. No doubt this is a commendable step wherein we brought African Union as a part of G20. But एक बात क्वेश्चन सुनने वाली है कि on this big table called G20 हमने उनको तो बैठा दिया, but don't you think how they will be raising their voice, how their interest will be taken care of? That is one thing which needs to be seen in the future as to how the big players, how they will be treating African Union. So no doubt bringing them to such a big table is very, very commendable, because when you talk about inclusivity, तो आप इतना बड़ा कंटिनेंट, इतनी बड़ी पॉपुलेशन यू कैन नॉट इग्नोर. बट देन जो सबसे बड़ी बात आई कि जो प्रेसिडेंट थे अफ्रीकन यूनियन के, मिस्टर अजाली ओस्मानी, AZALI, और असुमानी, तो ये जो चेयरपर्सन थे उन्होंने आते ही एक बड़ा स्टेटमेंट दिया. आप लोगों ने देखा होगा उस दिन का हेडलाइन भी कुछ हुआ था, बहुत बोल्ड लेटर में न्यूज़पेपर ने लिखा कि इंडिया है इज नाउ ए सुपर पावर अहेड ऑफ चाइना. एंड दैट्स व्हाट वाज, पता नहीं चाइनीज मीडिया ने इसको कैसे देखा, बट देन आपको पता है कि इंडियन मीडिया तो आई मीन कैसे इसको देखे. एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट इट वाज इन थोड़ा सा बोल्ड दिख रहा था. मुझे पहले न्यूज़पेपर वो आर्टिकल देखा तो यही स्टेटमेंट नजर आया मुझे. नाउ लिविंग दिस, एक इंपॉर्टेंट इससे नरेटिव ये आता है कि समवेयर और द अदर इंडिया इज इंक्रीजिंगली becoming a voice for, I mean, least developed countries or developing countries. Not only this time, even at the back, not only this time, even under WTO, India has played a very important role in being vocal about the concerns of developing and least developed countries. Either issues with subsidies are concerned or issues with, I mean, food security is concerned. So this is one of the important takeaway. Pehla, the African Union consists of all the 55 member countries of African continent. So no doubt when they'll be coming to this particular big table, so their concerns can also be discussed and debated. And since this has been done under India's presidency, so automatically this also indicates that, I mean, India has an important role to play as far as, I mean, issues related with global south is concerned. And at the same time, African Union consisting of 55 countries, when they have been brought, so that also is a sign that that will also increase the, I mean, extent of inclusivity.
नाउ अफ्रीकन यूनियन की सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ द अफ्रीकन यूनियन फॉर इंडिया। तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर याद रखना है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स होते हैं अफ्रीकन कंटिनेंट में, तो अफ्रीकन यूनियन जो है दैट इज ए की ड्राइविंग फोर्स। सो एनी पॉलिटिकल एंड की इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स इन अफ्रीकन कंटिनेंट, those are largely driven by African Union. जिसका अगर ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो यही है अफ्रीकन इंटीग्रेशन एंड इंक्रीज्ड कोऑपरेशन अमंग्स्ट अफ्रीकन कंट्रीज। दूसरा मेजर पार्ट क्या है? इंडिया largely started exploring Africa in 2008-9. Nearby that, China started this way back in 2000. China has formed a particular forum, that is Forum on China-Africa Cooperation, and this forum has led to increased Chinese interest in African continent. But then, when African Union has been inducted into G20 as a part of India's presidency, so definitely India now also will be pitching it very high to explore deeper into Africa. More than it, when African Union consists of 55 countries and India is struggling with permanent membership of United Nations Security Council, so definitely, I mean, their votes matter largely to India. So these are certain important things in context of, I mean, significance of the African Union for India. पहला significance हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? 55 member countries हैं और African Union largely drives economic and political development of this particular continent. So that's why, I mean, bringing African Union to the board of G20 will no doubt will be path breaking for India as well as African Union also. Second important point हमने बोला कि I mean these African countries in African continent are laden with minerals. China has already invested largely in Africa since 2000, though India started late in 2008-9, but then this time when African Union has become a member under India's presidency, India will be taking this and trying to explore deeper into Africa politically, economically. Understood? And at the same time, मैंने बोला कि since India is struggling with permanent membership of United Nations Security Councils, I mean 55 member nations, if all those are members of United Nations, so their votes also counts very much for India. इतना समझ में आप लोग को? All of you understood this? Now, how in Indian context हम देखें कि इंडिया के लिए गेन क्या है? पहला तो जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स है, आई मीन टॉकिंग अबाउट ग्लोबल गवर्नेंस। अभी तक जहां तक ग्लोबल गवर्नेंस की बात थी, तो आप लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बोलेंगे कि सोवियत यूनियन, यूएसए। कुछ दिनों के बाद बोलेंगे कि दो मेजर ब्लॉक्स हुए, चाइना, राइजिंग चाइना एंड यूएसए।
And now the emerging markets, emerging players are also becoming larger part of global governance. So when African Union will be part of G20, that also says India's interest or India's importance in global governance. Because most of the time, India will always discuss the problems being faced by countries of global south, and when the India will be vocal for concerns issues related with global south, that's how India can contribute in global governance. Before this also, India has engaged with different countries of Africa. So engagement is education, healthcare, technology, pharmaceuticals. So automatically Indian companies, this will also give opportunity to Indian companies to invest in Africa. Now, apart from it, it will lead to inclusiveness or it will create a multipolar world. And that's what at this stage is need of the hour. So how we will be taking it? Number one, it will lead to inclusiveness. India will become key player in global governance. Number three, Indian companies, can invest in Africa because earlier also India has engaged with individual countries in education sector, in healthcare sector, pharmaceuticals and technology. देखिए लास्ट इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट बता रहा हूं आपको स्ट्रैटेजिक जो रीजन्स है उस स्ट्रैटेजिक रीजन्स में देखिए आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि चाइना हैज एग्रेसिवली परसुइंग इट्स ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन अफ्रीकन कंट्रीज थ्रू इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव and many of the African nations are now experiencing the heat of it because they are already in debt trap of China and the way the island nation Sri Lanka has experienced. So somewhere or the other, if India with its democratic principles if we will be intervening in China, Africa, so automatically, India's, the way African nations will look at India will be different. And at the same time, these African nations also look for an alternative to China. So today, few of the nations going by their worst experience with BRI, where China is totally have created a monopoly sort of situation for them, creating conditions which have led them into debt trap. So if India is becoming vocal about their concerns, so definitely that will go in the India's interest. It was not only China, I'll tell you, it was Russia also which has intervened in African nations through its groups such as Wagner groups. It has not directly intervened, but Russia with its different groups, the mercenary group like Wagner, they have already intervened into different African nations. Now, Europe also is showing an interest in Middle East and Africa. And if you talk about Europe, there is lot of migration from Middle East, Africa,
to Europe, either in terms of employment opportunities or, labor migrate to those countries, for better opportunity or better jobs. So इस सिनेरियो में if India is exploring Africa and Africa nations, so definitely that will be win-win situation for both, Africa nations, India as well as global community. Understood? That's what is overall overview of induction of African Union as a member of G20. Now, taking the summary of it, सबसे मैं आपको बता दूं कि जो अफ्रीका में है minerals like lithium, chromium, that has attracted the attention of global players. आप लोग पॉलिटिकल साइंस में अफगानिस्तान को दूसरे तरह से देखे होंगे कि द वे यूएसए एंड रशिया हैज इंटरवेन्ड इन द पॉलिसीज ऑफ अफगानिस्तान. अगर आप लोग इकोनॉमिक साइड उसका देखेंगे तो अफगानिस्तान इज फुल ऑफ मिनरल्स, आई टेल यू. So one of the dimension that people say that USA has invested lot of money into USA. नहीं. US, most of the US companies, when USA was holding over Afghanistan, they have largely invested in Afghanistan, extracting minerals and other resources. That's what is the economic part. Political part आप तो बहुत ज्यादा पढ़े होंगे. तो मैं political part नहीं देखता. मुझे क्या देखता हूं? मैं वही देखता हूं कि मैं यहां पर क्यों हूं, आप यहां पर क्यों. अंडरस्टूड? सो एक ये भी पार्ट है, आप समझिए कि आज जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो लिथियम क्रोमियम का इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं बढ़ गया है. एंड दैट्स व्हाई इन केस ऑफ कंट्रीज लाइक नाइजीरिया, ऑल टुगेदर ह्यूज ऑयल बेस ऑल्सो. सो दिस सेट ऑफ मिनरल्स कोई भी अट्रैक्टेड होता है. और आपको पता है कि पहले गल्फ कंट्रीज में चाइना, यूएसए का इतना इंटरवेंशन क्यों होता था? बिकॉज ऑफ ऑयल, वन ऑफ द मिनरल रिसोर्स. तो आपको समझ में आया कि एक कंट्री दूसरे कंट्री में क्यों जाता है? इसलिए नहीं कि इंडिया अच्छा लगता है और इंडियंस अच्छे लगते हैं. नाउ टेक ए समरी ऑफ इट, देन विल बी कंक्लूडिंग. फर्स्ट पॉइंट, आप लोग, मैं लिखाऊंगा नहीं, डिक्टेट नहीं करूंगा, मैं जैसे बोलूंगा आप लोग पॉइंट वाइज लिख लेना. पे अटेंशन. अफ्रीकन यूनियन के कॉन्टेक्स्ट में हमने डिस्कस किया कि दिस कंसिस्ट ऑफ 55 मेंबर कंट्रीज, ऑल ऑफ अफ्रीकन कंटिनेंट. Bringing African Union to be part of G20, no doubt, will add to inclusiveness, and India, along with other countries, will largely become vocal about concerns of global South. Significance, as far as significance of the African Union for India is concerned, the first significance I told you that African Union is the major driving force of economic and political developments of countries of Africa. So when African Union has become a member of G20, no doubt, this particular organization will be largely responsible for, all the economic and political developments and related policies. Since they have become member under India's presidency, automatically India's interest, along with their interest, will be taken care of both India and African Union. Next important point I told you
कि though India started with Africa in 2008, China started way back in 2000. China has already set up, created a forum for China and Africa cooperation, and this forum has led to larger investments by China and Chinese companies into Africa, helping them in attaining their economic interests. Third important point, I told you that India is largely struggling with permanent membership of United Nations. So when African Union has come on the board, so definitely India can pitch its voice, asking them to vote in its favor as far as permanent membership of United Nations Security Council is concerned. As far as gain for India is concerned, number one is that India will be largely involved in global governance, and that also justifies the way G20 was successful, because before the final summit on 9th and 8th September, most of the experts around the globe were divided that a common consensus cannot be reached in the mid of geopolitical tensions. So nobody has ever thought that this way, G20 will be successful. But the way Indian diplomats, the way they have worked, and the way the different member countries were brought to a common consensus, that is not a win or success for India, but it's also a success for all the G20 member countries. So this itself shows India becoming vocal about, global issues, being part of, global governance. Second important point, which I told you, कि Indian companies will get larger opportunity to invest in Africa. And not only this will also lead to cultural engagements. This will also lead to social engagements, because when investment takes place, economic growth takes place, and that's why people start coming together. There is movement of labor, there is movement of technology. People start accepting new tastes, new flavors, and that's what helps them in bringing people from two countries, two nations, two continents together, and that's what led to better economic growth in the future as well. So जब इंडियन इन्वेस्टमेंट्स इतना होगा, इतनी अपॉर्चुनिटी होगी, इंडिया ऑलरेडी हैज इन्वेस्टेड in Africa, in different countries in Africa, in education sector, in health sector, technology. This will create more opportunity for India and Indian companies to invest. लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था आपको कि देखिए, इसे एक सबसे बड़ा फायदा होगा कि जो कल तक यूनिपोलर वर्ल्ड, बाईपोलर वर्ल्ड की बात कर रहे थे, नाउ 55 कंट्रीज, अफ्रीकन यूनियन का बोर्ड पर आना इज नॉट ओनली वन ग्रुप का आना, इट्स सिंपली लाइक 55 मेंबर कंट्रीज का बोर्ड पर आना, एंड दैट्स व्हाई दैट विल लीड टू क्रिएशन ऑफ ए मल्टीपोलर वर्ल्ड. So that's what is altogether narratives about, induction of African Union to be a part of G20. Is it fine? Any question there? आपको समझ में याद आ जाएगा आपको कुछ पॉइंट्स, अगर इसके 50% भी पॉइंट्स याद आए तो काम चल जाएगा. देखो, स्ट्रैटेजिक रीजन से आप लोग देखो पॉलिटिकल साइंस ज्यादा ऑप्ट करते हो, जो इंटरनेशनल रिलेशन, प्लीज पे अटेंशन, एंड दोज राइटिंग आंसर्स फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस आल्सो. देखो, एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन इससे क्या आएगा
There can be different ways of asking questions. If you go by the India experience, so-called economic expansion, so-called imperialistic views, ambitions, expansionist ambition, इंडिया का वैसा नहीं रहा है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. We do have along with us smaller countries still existing today is an example that we do not follow expansionist policies. Otherwise, India would have easily acquired Bhutan, easily acquired Nepal, easily acquired Sri Lanka. I mean, all these things would have been done. But then, the existence of small states itself is a sign that India has not pursued its expansionist policies. So, this is an example for the world to realize about India. No doubt, India has always safeguarded its sovereignty, always and every time. So, today, the African countries must be realizing that interest of USA, interest of China, interest of Russia are their political interest, strategic interest, and economic interests. So they have experienced this, that how USA, Russia, China have served their political, economic, and strategic interest by investing, interfering in African countries. So, under India's presidency, when they have been brought so that they can raise their voice also, is a sign which shows that they will be key ally to India's interest, and this will be win-win situation for not only for India but for those 55 countries also. The level of investment in Africa will be increasing like anything because of critical minerals. All the countries, those who want to expand, want to invest across, are in a way in different forms of dialogues so that they can start investing in Africa. Once you start investing, when you talk about international relations are not merely political. Once those relations start, then the exchange of ideas, exchange of information, that also are the building blocks of these international relations. Movement of people across regions, movement of technology, acceptance of new food habits, new dress, new patterns, sharing cultural values, that deepens, create deep bonding, and that's what led to better international global relations. So you need to understand from this particular point of view, induction of African Union to be part of G20. Is it fine, all of you?
Next, also India, Middle East, Europe Economic Corridor. अभी तक आपको कोई डाउट है? All of you understood? याद आ रहा है आपको? You can recall the facts, figures. Those who are online, dear, all of you are able to understand. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now pay attention. All of you. India, Middle East, Europe Economic Corridor. पहली बात तो समझना है कि इट्स ट्रांसनेशनल, नॉट ओनली रोड, रेल एंड शिपिंग रूट. ट्रांसनेशनल है विद इन कंट्रीज, इन्वॉल्विंग not only rail but shipping roads connecting two continents. For this particular project, a memorandum of understanding has already been signed between Saudi Arab, European Union, India, UAE, France, Germany, Italy, and US. You must have, you can recall the word economic integration used by me many times. Now, this is one of the example of economic integration. So, which are the member countries you need to understand? It's Saudi Arab, it's European Union, it's India, UAE, France, Germany, Italy, and USA. But ये complete list नहीं है. I mean, I have not talked about Jordan. I have not talked about Israel. I mean, though they have not signed MAO, but then definitely this route will be passing through them also. बट मैं आपको यही बता रहा हूं कि G20 समिट में जो MOU साइन हुआ उसमें ये कंट्रीज पहले इनिशियल लेवल पर इन्वॉल्व थे. जो इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा, दैट विल हैव टू सेपरेट कॉरिडोर्स. एक ईस्ट कॉरिडोर होगा और दूसरा क्या होगा, नॉर्दर्न कॉरिडोर. जो क्या कर रही हो तुम? जो ईस्ट कॉरिडोर होगा दैट विल बी इन्वॉल्विंग कनेक्टिंग इंडिया एंड अरब वर्ल्ड, और जो नॉर्थ कॉरिडोर होगा दैट विल बी कनेक्टिंग अरब कंट्रीज टू यूरोप. These will include railway projects. These will include shipping projects also. At time, there will be ship to rail connectivity also. And apart from it, these will completely integrate or connect two different geographies, और दो डिफरेंट ज्योग्राफी में बोल रहा हूं, एक यूरोप एंड दूसरा एशिया. ऑब्जेक्टिव्स जो है इसके, जो
एमओयू में जो ऑब्जेक्टिव्स लिखी गई है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में जो इसकी ऑब्जेक्टिव्स दी गई है, उसमें पहला ऑब्जेक्टिव है जनरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट्स इन दोज पर्टिकुलर रीजन्स. Now, why there was a need for something like I.E.M.P? So we need to understand the overall, the economic interest of the countries which are larger part of I.E.M.P. And these economic interest of these countries enforce them to be interdependent on each other. And since they realize their interest, they realize that their interests are interdependent, when they will be coming together, that will create a synergy effect, not helping their, fostering their economic growth, but fostering global growth as well. Now, how this synergy effect can be realized, you need to understand the overall macroeconomic situations of these countries. Now, in the near future, there is no denying the fact that India is going to be a manufacturing hub. So India becoming a manufacturing hub need to export its goods to Middle East, even to Europe, and at the same time, these manufacturing also needs huge dependence on energy. So in the near future, India's energy requirements are bound to increase. So this is simply one narrative which runs in favor of India, India's huge population, driving youth population, growing youth population, driving consumption demand. The world knows it better. Now, going by the Gulf countries, for Gulf countries, you need to understand that these countries have now realized that only dependence on oil is not going to make their economies sustainable. They have realized that the global world is going for alternative forms of energy, and hence somewhere or the other they need also to bring a structural transformation in the economies. So in order to bring a structural change in their economies, countries like Saudi Arab are going for large scale investments building mega cities. UAE again has gone for larger investments, and apart from it, they want to build centers of finance, centers of technology, centers of innovation. Third, when we talk about Europe and European Union, so we all know that countries like Italy, Germany, they are masters in innovation. They are masters in research. So all these conditions of these three blocks make them interdependent on each other. And since they realize that they need each other, so when they'll be coming on a common platform, investing larger amount, so that will create a synergy effect, not only fostering their economic growth, but global growth as well.
Is it fine? All of you, you need to understand under which context, under what environment these countries are coming with each other, coming together. All of you done with this? Now, we need to compare I.E.M.P and BRI. If you talk about the objectives of both BRI and I.M.P, both are mega transnational projects. Both carry mega transnational projects. Even जो BRI is very large in terms of scales as compared to I.M.P. जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है BRI का expected around $1 trillion, and that involves 3,000 projects. जो countries BRI को साइन किए हैं, there are more than 150 countries and 30 international organizations. But interesting part ये है इसके अंदर कि कुछ countries like Saudi Arab and UAE, they are part of both. They are part of BRI also, and they are part of I.E.M.P. Now, nothing can be predicted as on date. Future will tell, how the countries are, coming. Whether they are with both, going to be with both, or whether they are going to take decisions, whether they'll be with I.E.M.P or BRI. Italy has already said that it is not going to be part of BRI. अंडरस्टूड पहले इटाली क्या था बीआरआई का पार्ट था दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है ऑल ऑफ यू पे अटेंशन किससे खेल रहा है नीचे रखो बीआरआई का जो सबसे पहला इश्यूज है वो है एलिगेशंस ऑफ डेट ट्रैप फॉर instance Sri Lanka which joined BRI last year has declared that it is unable to meet its debt obligations and that led to economic crisis in Sri Lanka. As I told you, some of the African nations have expressed their concerns about debt trap diplomacy of China. If you talk about BRI, it is simply a one nation narrative which wanted to serve its own economic interests. Being a manufacturing hub, it was trying to access markets wide across in Gulf, in Europe, and that's why it started with BRI. So BRI is one nation narrative simply, and that narrative is only of one country, that is China. Unlike BRI, I.E.M.P as on date is not a one nation narrative. The overall fund which will be utilized under I.E.M.P as on date will be largely corporate funds from, private equity funds from USA, sovereign funds from UAE and Saudi Arab, and institutions from both public and private sector from India will be participating as far as finance related to, I.E.M.P is concerned. So there is no question of debt trap as such as we discuss under BRI.
Now, there are many projects under BRI wherein many analysts say that before starting with the projects, cost benefit analysis was not done. If you talk about power projects in Pakistan, that is Gwadar and Hambantota project port in Sri Lanka. So larger investments have been done, but then deriving benefits, cost has been incurred. But to what extent benefits will be derived, that analysis is not being done, and that's why if this Hambantota port would have been generating revenue, so automatically they would have been in a better position to repay to the China. But then why they are into debt trap today? Because that port is not able to generate that much revenue as it was, expected. So what is happening? The overall projects, are running into and becoming a debt burden for the countries. This is in context of BRI, but in context of I.E.M.P, all the facilities will be backed by demand. So unless and until there is no demand, no such infrastructure of such type will be taken forward. And that's why जो लार्जर फाइनेंस का इश्यूज था कि भाई इतना बड़ा फाइनेंस कहां से आएगा, सो ऑटोमेटिकली मैंने बताया कि फाइनेंस सोर्सेज ऑफ फंड्स कहां से होंगे, बट फाइनेंस की वायबिलिटी है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि भाई प्रोजेक्ट्स whether cost benefit analysis of the projects need to be done or not, or it should be done. So simple सी बात है भाई, इसमें IMEC में बोला जा रहा है कि unless all the facilities, all the projects will be driven by demand. It means when they'll be driven by demand, so all the projects will be there to generate revenue. Is it fine? Can you compare BRI and IMEC? फिर मैंने क्या बोला, BRI क्या था, वन नेशन नैरेटिव था, IMEC वैसा नहीं है. BRI में मैंने बोला कि all the funds, all the capital, all the funds are of the sovereign fund of China and other Chinese companies, which has led to debt trap of many nations which are the signatories of BRI. In contrast, the larger investments will be from private equity from USA, sovereign fund from UAE and Saudi Arab, and at the same time, public and private institutions in India both will be contributing to the overall investment. Understood? Now I.E.M.P and India. Understood? पहला पॉइंट जो है कि this will create lot of employment opportunities in infrastructure sector. ये पहली बार नहीं है where Indian companies will be investing in Gulf countries or outside. जो इंडियन रेलवे की इंटरनेशनल यूनिट है IRCON, IRCON, this company has experienced building railway networks in Iraq in 1990s. So going by this, the other infrastructure companies which are there in India, they will be largely involving in infrastructure creation, because altogether आप बताइए कितना बड़ा infrastructure investment होगा, तो definitely that is going to create multiplier effects on overall economic growth in terms of employment and output generation. So this will no doubt not only benefiting India, but will be benefiting other partners also.
The second important point is that the cross-border shipping and railway corridor will reduce logistic costs. India is targeting Middle East for its engineering exports. So automatically its engineering exports will become fast. The supply chain will become very, very effective, and overall cost will be reduced. The next important point is that India has got the golden opportunity to create green hydrogen and green ammonia hubs near the coasts. Green hydrogen and green ammonia hubs near the coasts. Supplying these through railways, shipping to the Middle East and eventually Europe will become very, very easy. Again, I am repeating this very important point. India is in the near future is going to be creating green hydrogen, green ammonia hubs near coasts. So supplying these through railway and shipping networks routes to Middle East will become very easy. At the same time, India and Gulf countries have massive solar energy plants also. And under International Solar Alliance objective of one nation, one world, one grid, at certain points where India in critical time period needs energy, so India can get solar energy from these Gulf countries if required at lesser price. Because altogether, I mean, solar energy creation in Gulf countries, I mean, मुझे लगता है कि when when the world dependence on Gulf countries for oil will reduce, dependence on them for solar energy will increase, and that's why the beauty of geography of those, I mean, Gulf nations are. So this, no doubt, I mean, India being a good partner with the Middle East countries, definitely under this particular program of one sun, one world, one grid, India can be benefited. And सबसे पहला जो इसमें important part है कि India through I.E.M.P will be able to escape a key geopolitical trap. और जानते हो वो geopolitical trap है northwestern part mein India does not have territory. I mean, each and everything is with Pakistan. So going through I.E.M.P will help India to escape from that particular trap. So that's what we on geopolitical fronts is a very good thing for India. ये समझ में आप लोग को all of you understood the India's concerns? आप नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री इंडिया का क्या है? आई मीन पाकिस्तान है ना नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में. सो IMEC Pakistan is not a part of this. So through IMEC will not be directly associating or linking this particular project with Pakistan. So automatically we have got an alternative. Understood? India has got an alternative. So that's what I'm trying to tell you. If anyway अगर कोई country involve होता और अगर ये सारा कनेक्टिविटी पाकिस्तान और एडजॉइनिंग एरिया से जाता तो ऑटोमेटिकली इंडिया वुड हैव इन दिस पर्टिकुलर ऑलवेज इंडिया वुड हैव कॉट इन दिस आई मीन पॉलिटिकल ट्रैप जियोपॉलिटिकल ट्रैप बट सिंस I mean IMEC in its projects is no way connected to Pakistan, India has easily escaped through this geopolitical trap. Now what are the challenges? पहला चैलेंज तो ये है कि पहले फॉर्म एंड डिटेल प्लान आए और तब हमें देखना होगा कि उस डिटेल्ड प्लान में
कॉन्क्रीट प्लान में उसके कंडीशंस क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है. Understood. So, I mean, we cannot discuss and debate to a larger extent without the concrete and detailed plan of this particular economic corridor. दूसरा क्या है कि देखो, लेंगे नेटवर्क ऑफ रेलवे लाइंस, रोड्स, पोर्ट कनेक्टिविटी across countries require high level of coordination and planning. और सबसे पहला बताओ कि जो कनेक्टिविटी है that will be passing through Jordan and Israel. अब उन दोनों को साथ में लेना is altogether is very difficult task. So anyway, that leads, I mean, lot of diplomacy, I mean, bringing them together. And here, India having good relations with both the countries can play a very good role in bringing them back to the table. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि देखो, बीआरआई का ये 10th ईयर है. बीआरआई 2013 में शुरू हुआ था. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इतना बड़ा प्रोजेक्ट्स रहेगा, इतने कंट्रीज रहेंगे, हर एक कंट्रीज का अपना अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट रहेगा. सो देयर इज बाउंड टू बी सर्टेन सेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे थोड़ा बहुत, एंड दैट्स व्हाट बीआरआई हैज आल्सो एक्सपीरियंस. और देखो, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट के बाद भी बीआरआई आज भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया. So no doubt, not at that length, but similar, on a similar pattern, I.E.M.P will face these challenges also. But then, considering the different set of blocks which are part of different set of countries which are part of this particular block, I mean, things can be resolved. So there can be coordination with financial package, geopolitics, diplomatic consideration. All these will be challenged. और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया तुम लोग को कि इसमें ऐसे भी कुछ कंट्रीज हैं जो बीआरआई के भी पार्ट है और आईएमईसी के भी पार्ट है, लाइक सऊदी अरब एंड यूएई. तो अब देखना होगा कि वो किन के साथ आते हैं या फिर दोनों के साथ रहते हैं. दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. आने वाले दिनों में ही हम लोग को पता चलेगा. So this is all the India Middle East economic corridor. So taking the summary of this, guys, are you कुछ समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. Pay attention now. इसकी समरी देख लेते हैं. हम लोग ने शुरू किया कि आईएमईसी जो है एक ट्रांसनेशनल रेल एंड शिपिंग रूट है, स्प्रेड अक्रॉस 2 continents. For this particular project, an MOU has already been signed between Saudi Arab, European Union, India, UAE, France, Germany, Italy, and USA, and few more countries will be joining the board. The I.E.M.P will be including 2 corridors. One is East Corridor connecting India and Arab countries, Northern Corridor connecting Arab to the. Objectives इनका यही है कि अगर economic growth, if you are trying to attain economic growth, so altogether there need to be a larger set of investments, and this will integrate economically both countries of 2 continents, Europe and Asia. जो सिनर्जी इफेक्ट की बात मैंने कहा कि जो भी कंट्रीज है, हम देखें कि आज इंडिया in the near future is going to be a manufacturing hub. India also will be willing that it should get the market access of Middle East, it should get the market access of Europe. There need to be better infrastructure connecting those countries
so that being a manufacturing hub, it can export its goods to those countries. And that's why it needs better logistics, better supply chain management, and India also can see that, I mean, through these corridors, it can fulfill its economic interests. Similarly, the Gulf countries now have realized that world dependence on crude oil in the near future is going to decrease because the world is looking for alternative form of energy. And that's why those Gulf countries are also trying their best to restructure their economy so that their dependence on oil decreases and the base of economic growth becomes wider. And that's why they are largely investing in creating mega cities, building cities as centers of finance, centers of innovation, centers of technology. Third, going by Europe, countries like Italy, Germany, they do have larger experience in innovation, experience in research. So all these countries of these three blocks, when they'll be coming together, they somewhere or the other realize that their interests are interdependent. So when they'll be coming together on a board, on a platform, I mean, something better will happen, which will be fostering, economic growth of not only their countries, but global growth as well. Next, I did a comparison also of IMEC and BRI, wherein I told you that in terms of objectives, if we talk about that both the projects somewhere or other seems to be similar because these are mega transnational projects. But in terms of scale, I mean, BRI seems to be larger than IMEC. Already the larger investments up to the extent of $1 trillion has been done, and more than 150 countries are signatories of BRI along with 30 international organizations also. But then the interesting part is that few of the countries have already shown their interest in coming out of BRI because they understand the debt trap diplomacy of China. The other part which I discussed with is that though there are few countries which are already member of BRI, they are also signatories of IMEC. The BRI, as I told you, is one nation narrative wherein China wants to expand its manufacturing base, trying to access Gulf countries, trying to access markets of Europe, and that's why it's simply, the BRI is going to simply serve the economic interest largely of China, where it could gain market access of Gulf and Europe. In contrast to this, the overall funding in IMAC will come from diverse sources, wherein private equity will be investing from USA, sovereign funds from UAE and Gulf countries will be investing, and from India, public and private sector institutions will be investing. So there is no concern of data diplomacy as has been experienced by many countries under BRI. The next important point, which I told you, that in most of the projects under BRI, which are under date trap now, cost benefit analysis was not done, and that's why Hambantota port project in Sri Lanka has become a debt burden for Sri Lanka because, as expected, it is not able to generate that much revenue through which Sri Lanka can repay back. ठीक हो गया, तुम आए ठीक हो गया, इसलिए मैं बोलता हूँ तुम इधर ही रहा करो तो ठीक रहेगा. कहाँ जा रहे हो? तुमको नहीं. चलो 10-15 मिनट प्लीज, मेरा भी तो संडे है.
Pay attention. Now talking about I.E.M.P and India. पहला मैंने बताया कि this will create a lot of employment opportunities, and this will not also give investment opportunities to Indian companies to invest in infrastructure. दूसरा मैंने I.E.M.P के कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बताया कि India no doubt will be becoming a manufacturing hub. So if it will be, India will be getting access to, Middle East, access to Europe through roads, railways, shipping. No doubt that will boost the supply chain management, and at the same time that will reduce the logistic cost. India can export engineering products to Middle East, and that's why India is targeting hard for it. India has the opportunity to create green hydrogen and ammonia hubs near coasts, so that simply can be supplied to Middle East and other countries through, shipping and railway networks. At the same time, India and Gulf countries have massive solar energy investments in solar energy. So at the critical time period when India is in need of solar energy, so under one sun, one world, one grid arrangement, India can be connected to West Asia, and India can get solar energy at reduced costs. और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताया कि गोइंग थ्रू I.M.P will help India to escape an important geopolitical trap in the northwest. चैलेंजेस मैंने बताया कि देखो, फॉर्म एंड डिटेल प्लान जब तक नहीं आता है तो दैट बिकम्स we cannot speak anything. Creating a detailed and concrete plan itself is a challenge. दूसरा इंपॉर्टेंट मैंने बात किया था कि इतना नेटवर्क रेलवे लाइंस का, रोड्स का, पोर्ट कनेक्टिविटी का, so there are a lot many financial issues related to revenue sharing, issues related to what fee or what revenue each countries will be charging, what fare each country will be charging. So there will be lot many issues which need to be tackled. और दूसरा मैंने बताया कि some at times though countries like Jordan and Israel, which will be a member of this, and automatically when they'll be connecting with each other also, so that will be very interesting for the world to see how they are coming to terms. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बात किया कि देखो आज BRI का 10th ईयर है, बट आपने गोइंग बाय इट्स एक्सपीरियंस हम देखेंगे, so there were lot many conflicts related to financial packages, geopolitics, diplomatic consideration. So ये सब सारे challenge I.E.M.P also will be facing. Maybe magnitude may be differ, but then हर एक countries के अपने अपने economic interest होंगे, so definitely they'll be facing. और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या बताया था इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको, सऊदी अरब एंड यूएई. इज इट फाइन? कुछ समझ में आया? थोड़ा मोड़ा? सिक्सटी % समझ में आया कि नहीं? ये देखो, इसमें समझने वाली क्या बात थी, कथा कहानी था ना. अच्छा, थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन है. मैं फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं डिस्कस कर रहा हूँ. जो टेक्निकल क्वेश्चंस है ना, थोड़ा सा डिस्कस करने दो, जो JS3 में आए हैं, और फिर उसके बाद छुट्टी. Faster economic growth requires increased share of manufacturing sector in GDP. अभी बात कर रहे थे, particularly of MSMEs. याद रखिएगा, आने वाले दिनों में जब तक आप मेंस लिखेंगे, आप MSME पर
क्या करेंगे, नोट्स बना लेंगे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पर कि हाउ दे कंट्रीब्यूट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हाउ दे कंट्रीब्यूट इन इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग। अगर ओवरऑल आप देखेंगे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इनका, तो मोर देन कंट्रीब्यूशन इन ओवरऑल प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम एमएसएमई, अंडरस्टूड, मोर देन 80%। सो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जब इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन एमएसएमई में होगा, सो ऑटोमेटिकली दे विल बी ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ, अंडरस्टूड। सो ये क्वेश्चन है जहां पर एक पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता था कि भाई कैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जीडीपी में अगर कंट्रीब्यूशन हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बढ़ाना है, अभी सबसे ज्यादा जीडीपी में शेयर किसका है, सर्विस सेक्टर का। अब यहां पर किस चीज की बात करने की जा रही है, तो किस चीज को बढ़ाना होगा, एमएसएमई को, अंडरस्टूड। यही क्वेश्चंस लिखना था। तो एमएसएमई को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है, क्रेडिट पैकेजेस दी है, इस बजट में भी गवर्नमेंट ने पैकेज दी है एमएसएमई के लिए, और क्यों, सबसे बड़ी बात क्यों ऐसा एमएसएमई को क्यों हम इतना सपोर्ट करती है गवर्नमेंट, आप सुनो इसकी बात। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, सबसे पहला तो क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देता है। मैं गांव में काम करता हूं, बगल में शुगर फैक्ट्री है, मैं वहां पर भी काम करता हूं, मेरा खेती का भी काम हो जाता है, मैं शुगर फैक्ट्री में भी काम कर लेता हूं। छोटे मोटे कॉटेज इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल यूनिट्स है, मैंने अपना थोड़ा मोड़ा, मेरा खेत है, मैंने वहां पर भी काम कर लिया, और 10 किलोमीटर दूर पर जो फैक्ट्री है ना, मैं वहां पर भी जाकर रात में भी काम कर लेता हूं, और नहीं तो इफ आई गेट द अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग द डे आई वर्क। एमएसएमई आज के डेट में सबसे ज्यादा वो एम्प्लॉय करती है व्हाइट कॉलर वाले को नहीं, ब्लू कॉलर वाले, अंडरस्टूड। ब्लू कॉलर जॉब्स मींस मैनुअल वर्कर्स, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड। और आज सबसे ज्यादा लेबर फोर्स देखेंगे तो कौन है, वही लोग हैं ना। आपको आएगा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बताऊंगा ना, तो वहां पर मैं बताऊंगा आपको। तो वैसे में एमएसएमई को अगर बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, सो डेफिनेटली दैट विल नॉट ओनली हेल्प इन increasing manufacturing sector in GDP, but at the same time, overall, they will be largely contributing to India's growth. अब दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ डज ई टेक्नोलॉजी हेल्प फार्मर्स इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। मार्केटिंग के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी क्या किया है, ई नाम शुरू किया है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। और आपको देखो ई टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन में तो ड्रोन्स, किसान ड्रोन्स क्या है, दैट इज ए फॉर्म ऑफ ई टेक्नोलॉजी और नॉट। उसी तरह से आप डिफरेंट एग्जाम्पल देकर इस चीजों को क्या कर सकते थे, जस्टिफाई कर सकते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये देखो क्वेश्चन, most of the unemployment in India is structural in methodology adopted to compute unemployment in the improvements. Structural unemployment क्या होता है, देखिए जो मैं बता रहा हूं वही चीज सुनो, इधर उधर का मत पढ़ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ लिया इधर उधर का और कहीं अच्छा नहीं दिखा। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, अगर 1950 से इंडिया का ग्रोथ स्टोरी देखोगे तो लार्जली एग्रीकल्चर डोमिनेंट हुआ करता था जीडीपी में, एंड एट द सेम टाइम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में। बट ओवर द इयर्स होता क्या गया कि डिपेंडेंस ऑन contribution of agriculture towards India GDP started gradually decreasing, and contribution of services and industry, started increasing, while services increased exponentially as compared to industries. Now, with this increase, sectoral composition changes, wherein once agriculture largely contributing, its contribution has been reduced and service sector contribution has been increased.
Don't you think if this sectoral composition is increasing, so those who will be contributing in sectoral production of goods and services, their skill sets also need to be changed in accordance. तो सेक्टरल कॉम्पोजिशन चेंज होते गए, स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी कंप्लीटली चेंजेस, बट देन the skill sets which were required by the labor force in tune with the changes in that sectoral composition, that did not change. तो एक तरफ सर्विस सेक्टर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द ग्लोबल क्लाइंट, और दूसरी तरफ हमारे लेबर फोर्स अनस्किल्ड, नॉट बेटर technocrats, I mean altogether not having the desired skills as required by the industry. So definitely that there lies gap. And that's what is the major structural reason behind a structural unemployment in India. इसी को कहते हैं दूसरा स्ट्रक्चरल। जानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हो सकता है? जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रही है। अब मैं अपना ही एग्जांपल दे दूं, दूसरे के एग्जांपल क्या दूं मैं तुम्हें? मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं आपको। आई हैव नेवर थॉट इन माय लाइफ दैट कभी कभी कोई मुझे बोलेगा कि डू यू नो मशीन लर्निंग? हाउ कैन आई नो? 10 साल पहले मैं बोलता कि देयर इज नो नीड फॉर मी टू लर्न पाइथन और मशीन लर्निंग। आज मैं क्या बोलता हूं, चाहो ना चाहो तो मैं चाहना पड़ेगा। आज आई एम फोर्स्ड टू लर्न मशीन लर्निंग एंड पाइथन फॉर data analysis, economics data analysis. So what I'm trying to tell you, upskilling, reskilling, understood? So this has only come forward because of technological disruptions. That is need of the hour. So unless and until as a labor force, I need to update myself, I may not be able to sustain in the market. So that's what has happened at the workplace, in the state of industries. इतना टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शंस हुआ, टेक्नोलॉजिकल चेंज होगा, एंड वी एज ए कंट्री विल नॉट बी एनफोर्सिंग ऑन, आई मीन अप स्किल्स, रीस्किलिंग. सो हाउ our labor force will be absorbed by, I mean, the new changes in industry requirements. So that's what also lead to a structural unemployment. अब जब ऐसा हो तो इसमें क्या बात की गई है कि अभी हम स्ट्रक्चरल जो अनएम्प्लॉयमेंट है कैसे मेजर करते हैं? तो पहले जो डेटा ली जाती थी, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की डेटा लेकर जाती थी। अब हम पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे लेकर जाते हैं, समझ में आ रहा? और उससे पता करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना है या कितना नहीं है। कभी कभी गवर्नमेंट स्टेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस से डेटा लेती है, कभी कभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से डेटा लेकर प्रेडिक्ट करती है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है या बढ़ रहा है। हाउएवर, जो भी मेथड है, मेथोलॉजी है, उसमें कहीं ना कहीं फैलेसीज हैं, और उस फैलेसीज को देखते हुए देयर नीड टू बी सर्टेन मेजर्स व्हिच कैन बी टेकन। पहला तो देखना होगा कि जो हम लोग एस्टिमेशंस कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं। हम 1 साल के बाद बेरोजगारी को पता करेंगे, 2 साल के बाद बेरोजगारी पता करेंगे। अगर मान लो कि इंडिविजुअल 6 महीने से बेरोजगार पड़ा हुआ है फॉर वन और द अदर रीजन, सो एज एन policy maker, I need to understand the reason behind this, this type of unemployment. So, if we are really serious about measuring unemployment, so we need to increase, the frequency of estimation. Now, unemployment का एक सबसे बड़ा important part है कि we need to measure unemployment at the regional level and at the industry specific level also. हम अभी तक अनएम्प्लॉयमेंट क्या मेजर करते हैं कि ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में क्या है, एंड दैट्स व्हाई कोई भी हमने मेजर लिया उसके लिए तो हम जनरलाइज्ड मेजर्स लेते हैं, जनरलाइज्ड स्टेप्स लेते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर मान लिए कि हम रीजन वाइज अनएम्प्लॉयमेंट मेजर करें कि नॉर्दर्न रीजन में कितना है, सदर्न रीजन में कितना, ईस्टर्न रीजन में कितना, वेस्टर्न रीजन में कितना है, सो वी कैन we can have multi-dimensional strategy region wise in order to tackle this. At the same time, industry specific unemployment measurement also.
industry specific.